Give the name of the process that occurs when a gas turns into a liquid. Condensation. Okay. पेपर है जी हमारा 42 सीरीज मई जून 2020. ठीक है, केमिस्ट्री theory extended. Occurs when a solid turned into a gas without first forming a liquid. Is used to separate a mixture of liquids with different boiling point. Method आपने बताना है कि method हम use करते हैं to separate a mixture of liquid with different boiling point. Yes, fractional distillation. Is used to extract aluminium from aluminium oxide. Aluminium from aluminium oxide. Electrolysis. Is used to separate a mixture of amino acids. तो मिक्सचर सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस, तो मिक्सचर्स जो है in this question the mixtures are amino acids. The symbols of the elements in period 2 of the periodic table are shown. ठीक है, तो ये आपको सिंबल्स आप देख रहे हैं. लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. For each of the following, give the symbol of an element from period 2 which matches the description. अगर आपको किसी सिंबल्स का थोड़ा सा इशू हो रहा है, उसका नेम नहीं याद आ रहा है, तो यू कैन गो इनटू द पीरियोडिक टेबल. आपके लास्ट में पेपर के बिल्कुल लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. For each of the following, give the symbol of an element from period 2 which matches the description. Each element may be used once, more than once, or not at all. Which element combine with hydrogen to produce ammonia? Nitrogen. Makes up approximately 21% of clean dry air. Has atoms with only 2 electrons in the outer shells. So, हम periodic table में चले जाते हैं so that आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी हो जाए और आपको देखना भी आ जाए. वैसे तो आपको आता है. दिस बेरिलियम बी. ठीक है, तो इसके 4 आउटर शेल में कितने बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स.
only 7 protons. Again, it is nitrogen. Is a monoatomic gas. So आपको पता है it is neon. Is a soft metal stored in oil. Lithium. Question number 2. Fluorine forms both ionic and covalent compounds. Magnesium reacts with fluorine to form the ionic compound magnesium fluoride. The electronic structure of an atom of magnesium and an atom of fluorine are shown. So, electronic structure हमने show कर दिया. Complete the dot and cross diagram to show the electronic structures of one magnesium ion and one fluoride ion. Shows the charges on the ions. आपने इसमें एक तो structure को complete करना है और next आपने charges को show करना है. तो इसकी आउटर शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे. फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज शेयर विद द फ्लोराइड. शेयर करेगा एंड फ्लोरीन सपोर्ट के पास 1 2 3 4 5 6 7 थे. ठीक है. सो इट विल टेक 1 फ्रॉम द मैग्नीशियम एंड 1 जो था वो इसमें से सेकंड फ्लोरीन के पास जाएगा, जो कि उन्होंने हमें शो नहीं किया हुआ है. ठीक है. सो वी विल मेक 1 क्रॉस आ जाएगा. ठीक है. सो इट इज एक फ्लोरीन एटम शो किया हुआ है, सो वी राइट डाउन 1 माइनस. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड? Magnesium fluoride does not conduct electricity when it is solid. What can be done to solid magnesium fluoride to make it conduct electricity? In your answer, explain why magnesium fluoride conduct electricity when this change is made. So, उसको briefly जो है वो describe करते हैं. Why magnesium fluoride conduct electricity when this change is made. ठीक है. So to make solid magnesium fluoride to conduct electricity, it can be melted. What can be done to solid magnesium fluoride? So it can be melted or dissolved in water its ions
So when we dissolve it in water, its ions become free to move. Elongate to conduct. First we uh, change its shape into a liquid form. इसको मेल्ट करेंगे, इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आएंगे, देन जो होगा इट्स ऑयंस जो हैं they become free into the water and allowing it to conduct electricity. Got it? Carbonyl fluoride is a covalent compound. The structure of a molecule of carbonyl fluoride is shown. Complete the dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of carbonyl fluoride. Show outer shell electrons only. So आपने सिर्फ जो है वो outer shell electrons show करने हैं. One dot and one cross. ठीक, so यहाँ भी इसी तरह होगा. अच्छा, कार्बन के साथ इसका है डबल बॉन्ड, so we make here double. Got it? The melting point of magnesium fluoride and carbonyl fluoride are shown. Magnesium fluoride 1263 and carbonyl fluoride minus 111. Explain using your knowledge of structure and bonding why magnesium fluoride has a high melting point. So magnesium fluoride, yes, they have strong electrostatic forces are basically. ठीक है? So write it down. Magnesium fluoride has a high melting point because
unbound and electrostatic force of friction between magnesium fluoride ions. ठीक है, and need high energy to high energy paper. Explain using your knowledge of structure and bonding why carbonyl chloride has a low melting point. तो इसके opposite हो जाएगा, it has weak intermolecular forces, ठीक है, between molecules, and these forces require less energy to break. Carbonyl fluoride has low melting point because it is a simpler compound with weak intermolecular forces between molecules. It needs less energy to break. Sulfuric acid is made from sulfur in a four-stage process. Sulfur is converted into sulfur dioxide. Sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide. Sulfur trioxide is converted into oleum. Oleum is converted into sulfuric acid. How is sulfur converted into sulfur dioxide in stage 1? So first step हमारा क्या होगा इसमें, स्टेज 1 में sulfur is react with the air or heat in the air. Describe how sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide in stage 2. Your answer should include equation of the reaction, temperature used, and the name of the process. So write down the equation. You can also write sulfur converted into sulfur dioxide equation also. आप अगर आप चाहते तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई restriction नहीं है, so you can write it also. Okay, sulfur trioxide form होगी. Temperature used. Temperature is 50 centigrade अगर आपको contact process याद है. Then catalyst is vanadium pentoxide. So आपके question different pattern से आते हैं.
प्रोसेस वही है, कॉन्टेक्ट योर हैबर प्रोसेस। एंड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफरेंट पैटर्न से आते हैं, बट दे आर टू इजी। The reaction in stage 2 can reach equilibrium. What is meant by the term equilibrium? So just write the equation of definition of equilibrium. The rate of forward direction are equal to the rate of reverse direction or backward direction, and the concentration of reactant and products are constant. The rate of forward direction is equal to the rate of backward reverse and concentration of both reactant and products are same, या constant are constant. ये दोनों पॉइंट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ऑफ marks. It has 2 marks. Sulfur trioxide is converted into oleum H2S2O7 in stage 3. What is sulfur trioxide reacted with to convert it into oleum? So it is reacted with concentrated sulfuric acid. आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. Oleum is converted into sulfuric acid in stage 4. Write a chemical equation for the conversion of oleum into sulfuric acid. So write it down. H2O7 H2O4 हम इसको बैलेंस करेंगे. So it is 2H2SO4. इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी 8 कंप्लीट होगी, 7 here and 1 here, 8 oxygen be complete, 4 hydrogen be complete, and sulfur is also. When copper is reacted with hot concentrated sulfuric acid, sulfur dioxide gas is formed. Balance the chemical equation for this reaction. So you have to balance the equation copper plus sulfuric acid, copper sulfate plus sulfur dioxide and water. ठीक है, तो बैलेंस बेसिकली हमारे पास जहाँ पे ब्लैंक्स है वहाँ पे होएगी. ठीक है, so we consider the first we have to consider the ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड पे इट इज 4, 5, 6 and 7 and reactant side पे it is 4. So we need 3 more ऑक्सीजन. ठीक है, जो कि हमें इसमें as apparently we have seen we need 3 more oxygen. But how we balance it? जब हम इसको अगर हम इधर 3 लगा देते हैं तो देन जो है वो सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सल्फर देयर आर 2 सल्फर. ठीक है, so preferably we have write here 2 so that sulfur is complete. So it is H2, H4, sulfur 2 and oxygen 8. So here if we write down 2 here, then
hydrogen is completed, sulfur is also balanced, and oxygen is also 4, 5, 6, 7, 8. 4 to the 8. Okay. So our equation is balanced. Sulfur dioxide is a reducing agent. Give the color changes that occur when excess sulfur dioxide is poured into acidified aqueous potassium magnate. Starting color of the solution. Potassium permanganate है, sorry, potassium magnate है, so it is purple. Starting color is purple, final color colorless. अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको बताऊं, कलरलेस लिखेंगे तो यू हैव दिस स्पेलिंग ऑफ कलर, COLOUR, colorless, क्योंकि here is the difference of British and American English. तो उसमें अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो जो है माइंड किया जाता है, ठीक है. सो अगर आप थ्रू आउट ब्रिटिश में पेपर सॉल्व कर रहे हो, ब्रिटिश इंग्लिश में, सो क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो जो आपको यहाँ स्पेलिंग दिया ना कलर की, यू हैव टू राइट दैट. तो समटाइम्स ये होता है कि हम मोस्टली हमने अमेरिकन इंग्लिश भी जो है वो यूज़ करना शुरू कर दी है अपनी रिटर्न स्क्रिप्ट में, सो उससे फिर जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग की तरफ चला जाता है. When sulfuric acid reacts with ammonia, the salt produced in ammonium sulfate. Write the chemical equation for this reaction. So H2 4 plus H3 ammonia, and salt is produced ammonium sulfate, and 4 twice SO4. So we have to write here 2F. So now equation is balanced. Okay. Barium sulfate is an insoluble salt. Barium sulfate can be made from aqueous ammonium sulfate using a precipitation reaction. Name a solution that can be added to aqueous ammonium sulfate to produce a precipitate of barium sulfate. So you can use barium nitrate or barium ऑक्लोराइड, ठीक है, कुछ भी आप इसमें दोनों. Write an ionic equation for this precipitation reaction includes state symbol. तो आपने ionic equation लिखनी है, so write it down, barium plus ionic equation, so we have to add charges. It is state, sulfur is -2 or 2 minus, it is in also aqueous state. Then barium sulfate is a precipitation salt, it is salt, ठीक है. So ये आपके पास इसकी आयनिक इक्वेशन आ जाएगी. Question number 4. Oxygen is produced by the decomposition of hydrogen peroxide. Manganese peroxide is the catalyst for this reaction. What is meant by the term catalyst? So simple, right? The definition of catalyst. Two marks here. So this जो है वो अच्छा सा सेंटेंस एक बना के a catalyst is a substance that
रिएक्शन में वो खुद से यूज नहीं होता. A student measure the volume of oxygen produced at regular time interval using the apparatus shown. Large lumps of manganese 4 oxide are used. Manganese 4 oxide catalyst, aqueous hydrogen peroxide, and then this is a gas syringe. A graph of the result is shown. आपको ग्राफ उन्होंने शो कर दिया. अगर आप ग्राफ में देखें तो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टाइम. तो अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट देयर इज इंक्रीज इन द ग्राफ एंड देयर इज अ कांस्टेंट straight line. What happened to the rate of this reaction at time increases? Reaction stop. Okay. In your answer, explain why the rate changes in this way. So basically, why जो रेट है वो स्टॉप हो गया. ठीक है. So write it down. फर्स्ट आप लिख लें या इनिशियली लिख लें, जैसे भी आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहती हैं. यू कैन आल्सो राइट एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो आई एम यूजिंग हियर इनिशियली. there is a higher concentration of hydrogen peroxide and the volume oxygen produced at higher rate or the rate of the reaction is increases. ठीक है. due to the higher concentration of hydrogen peroxide. ठीक है. due the frequent reactant molecules and catalyst. ठीक है. as the concentration increases, there is decrease volume of oxygen and rate volume of oxygen to fewer colleagues. These will come
shows a steep initial slope, ठीक है, faster rate which gradually level off. So ये आपका 4 मार्क्स का था, तो सो अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दिया ग्राफ, ठीक है. Next, the experiment is repeated using the same mass of manganese 4 oxide. Powdered manganese 4 oxide is used instead of large lumps. All other conditions stay the same. Sketch a graph on the axis in B to show how the volume of oxygen changes with time. So, हमने इसी पे ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर दिया. So, एक्सिस हम इसी पे बी ले लें और ये यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें. ग्राफ पहले थोड़ा सा जो मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड है उसको जो है आपने इसका पाउडर यूज किया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लार्ज लम्प. तो रिएक्शन रेट जो होगा वो इंक्रीज होगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शन से इनिशियली वो ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास लम्प फॉर्म, ठीक है. सो जो ग्राफ में इंक्रीज आएगा चूंकि पाउडर फॉर्म में है तो वो उसका जो है रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है. सेम ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा बट मोर स्टीपली ये राइज होगा, ठीक है. इससे ज्यादा उससे हो रहा है, ठीक है. इनिशियली राइज मोर स्टीपली देन द ओरिजिनल ग्राफ, and eventually it also shows the same line, ठीक है. कर्व आपकी स्मूथ होनी चाहिए और अच्छी तरह से बनी होनी चाहिए, ठीक है. सो यू हैव टू राइट इसको आपने कह दिया, ठीक है. In terms of particle, explain what happened to the rate of this reaction when the temperature is increased. So when temperature is increased, तो इसकी जो kinetic energy होगी it also increases, ठीक है. And it leads to the more and more collisions between the particles, and it also increases the rate of reaction. So now write it down. The particle kinetic energy move faster leads more frequent collisions particles
The equation for the decomposition of hydrogen peroxide is shown. तो ये आपको इक्वेशन हमने बता दी है decomposition of this water and oxygen. 25.0 cm cube of aqueous hydrogen peroxide forms 48.0 cm cube of centimeter cube of oxygen at room temperature and pressure. Calculate the concentration of aqueous hydrogen peroxide at the start of the experiment using the following steps. Calculate the number of moles of oxygen formed. So you have to calculate the number of moles of oxygen. So आपको पता है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा 1 mole of gas occupies 24 dm cube, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है. तो इसका जो है अकॉर्डिंग टू दैट वॉल्यूम ऑफ गैस हम जो है इसकी मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. मोल्स it is forms 48.0 cm cube. So it is 48 divided by इसकी जो मोलर वॉल्यूम है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर इट इज 24 dm cube है, हम इसको cm cube में चेंज करें तो इट इज 24,000, ठीक है. So it is about 0.002 mole. 0 did okay, deduce the number of moles of hydrogen peroxide that decompose. So from the equation we know that where is equation 2 moles of hydrogen peroxide produces 2 moles of water and 1 mole of oxygen, ठीक है. So moles of H2O 2 into of oxygen, then find के तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें. So that 2 0 0 तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.004, ठीक है. Calculate the concentration of hydrogen peroxide in mole or dm cube. So write down the formula of concentration. Concentration of H2O is equal to mole of H2O divided by volume H2 in dm. cm cube में दी हुई है, हमने उसको dm cube में चेंज करना है. टू चेंज इनटू dm cube 45 divided by 1000. आपके पास आएगा 0.02. अभी हम इसको इस तरह से राइट. So write down
Potassium can also be produced by the decomposition of potassium chlorate. The only product of this decomposition are potassium chloride and oxygen. Write a chemical equation for this decomposition. Yes. Potassium chlorate, it is KCl plus CO. Electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride using inert electrodes forms chlorine, hydrogen, and sodium hydroxide. What is meant by the term electrolysis? So you have to define the electrolysis. उसकी आपने सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है. So 2 मार्क्स की है. Electrolysis is the process electric current to drive a chemical reaction. It is often used to break down or decompose compound into their elements. So आपने comprehensive definition जो है electrolysis की 2 मार्क्स का है. आप comprehensive सी definition जो है वो ऐड करनी है. Name a substance that can be used as the inert electrodes. तो inert electrodes के लिए आप graphite, platinum, ठीक है, inert electrodes आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, platinum, graphite. Write an ionic half equation for the formation of hydrogen during the electrolysis. हाइड्रोजन की ionic half equation है इसको write down. Give the formula of the 4 ions present in concentrated aqueous sodium chloride. So, hydrogen and explain how sodium hydroxide is formed during the electrolysis. Write it down. 2 marks का है. So आपने बड़ा अच्छा सा आंसर इसका लिखना है. During the electrolysis of concentrated chloride, water molecules
hydroxide. They ask about sodium hydroxide. The combination of these bonds with sodium leads the formation. So, got it? Question number 6. Propane reacts with chlorine in a photochemical reaction is shown. C3H8 plus chlorine, C3H7 chlorine plus HCl. What type of reaction is this? So it is organic है. मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुकी हूँ. For organic we use the term substitution reaction. What conditions is needed for photochemical reaction to occur? एक तो आपके पास UV लाइट होगी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट, UV लाइट और UV radiation. Draw two structural isomer of compound with the formula C3H7Cl. Show all of the atom and all of the bonds. C3 तो सिंपल सबसे पहले कार्बन के 3 बॉन्ड को शो कर दें. These are simple isomers. और आपके पास जो है वो प्रोपेन है, नॉर्मल अल्कीन. सो इसके साथ आपके सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. मार्क्स के लिए we have to show two isomers. तो यहाँ पे हमने कलरिंग डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ में शोड अप करके एक कलरिंग हमने यहाँ शोड अप किया, एक हमने यहाँ. प्रोपीन, अब पहले था प्रोपेन का हम बना रहे थे, ठीक है. नाउ इट इज प्रोपीन. आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना पढ़ना है, ठीक है, पेपर को. प्रोपीन react with chlorine in an addition reaction as shown. जो लास्ट हमारे पास रिएक्शन था वो प्रोपीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था. नाउ इट इज एडिशन रिएक्शन क्योंकि प्रोपीन आ गया, एल्कीन आ गया एंड इट हैज डबल बॉन्ड, ठीक है. एल्कीन्स में आपको पता है डबल बॉन्ड. So now it is an addition reaction. State why this is an addition reaction. अब मैंने आपको क्लू दे दिया. This addition सारे कंबाइन हो रहे हैं. green atom add across the double bond. Double bond पे add, so it is an addition reaction, ठीक है. एंड फॉर्म्स, जब वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा देन इट फॉर्म्स सिंगल प्रोडक्ट. तो सारे हो जाएंगे सारे आइटम जो आप अकॉर्डिंग टू उसकी सेंस
क्वेश्चन की सेंस आपने जो पॉइंट मेंशन करना है वो देखिए आप प्रोपीन है, इसका मतलब है अल्कीन। तो अल्कीन में आपको पता है अल्कीन यानी प्रोपेन था ऊपर, अगर हम देखें इसको तो उसमें आपके पास ये सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं प्रोपेन में, ठीक है। अल्कीन में आपके पास सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं और प्रोपीन में आपके पास आएगा डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड पे क्लोरीन एटम अटैच होगा so it is an addition reaction. Got it? Okay, next item. The structure of the reactant and product of this reaction are shown. ठीक है, so it is propene, ये आपको डबल बॉन्ड के साथ नजर आ रही है, प्लस क्लोरीन एटम्स और आपके पास ये इसकी प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। Some bond energies are shown in the table. ये आपको बॉन्ड एनर्जीज उन्होंने शो कर दी है। Calculate the energy change for the reaction between propene and chlorine using the following step. Calculate the energy needed to break the bond. तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है। वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड वन ब्रेक हुआ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है। और वन बॉन्ड ब्रेक हुआ है क्लोरीन टू क्लोरीन। सो नाउ कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो कार्बन टू कार्बन वन बॉन्ड इट इज 3 7 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 6 1 कार्बन टू हाइड्रोजन 6 बॉन्ड्स थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 4 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 इसी तरह एंड chlorine to chlorine 242, ठीक। So write it down 247 carbon is carbon carbon double bond is carbon to 6 bond and then हमारे पास आ गया chlorine to chlorine 2 4, ठीक। तो ये आपके पास टोटल आ गया 379, ठीक है। This is the energy needed to break the bond. 3 6 7 9 joule. Next, when the bonds are formed. अब कितने bonds form हुए? कार्बन टू कार्बन 2 bonds, ठीक है। कार्बन टू हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 and carbon to chlorine 2 1 and 2. Now write down. So carbon to carbon 1 bond था हमारे पास, it is 3 sorry 2 3 7 3 7 और डबल बॉन्ड कोई नहीं है। So it is carbon to hydrogen 1 2 3 4 5 6 6 into 413, so it is 2478 plus 2478. Then carbon to
9 plus 339. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। It is 3850. 3850. सो इसको आप अब एनर्जी चेंज कर लेते हैं। Calculate the energy change for the reaction between propene and chlorine. So it is minus 7. So overall energy change जो आपके पास आती है minus 171. I think it is the last part, C or D. There are three functional group in compound A. This is the compound A. Three functional group आपको नजर आ रही है। आपके पास आपके पास carboxylic acid and you have ozone also. Name the homologous series of compounds that contain the following instructions: carbon to carbon double bond, alkenes, 2 simple and 2 easy, OH, alcohols, carboxylic acid. What would you observe when compound A is added to aqueous bromine and aqueous sodium carbonate? तो aqueous bromine में जब ये compound A add होगा, so it becomes colorless. ठीक है। Sodium carbonate, so carbonate ions are present. आपको पता है जब carbonate ions present हो तो there is fizzing. Compound A can be used as a single monomer to produce two different polymers. Draw one repeat unit of the addition polymer formed from compound A. तो आपने वन जो है उसकी वो मोनोमर यूनिट आपने बना देना। बहुत इजी है, सिंपल आपने उसका डबल बॉन्ड जो है वो हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे ग्रुप आएगा, बॉन्ड एंड पास एक one repeat unit. ठीक है, this is the one repeat unit. These are combined to make polymer. What type of condensation polymer is formed from compound A? So this is the polyester.